हेलो। हमने पिछले वीडियोस में देखा कि बफर क्या होता है। बफर, अलग अलग टाइप के बफर के बारे में एक्सप्लेन किया था। आज हम देखेंगे बफर कैपेसिटी के बारे में। सो व्हाट इज द बफर कैपेसिटी? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, मोनोबेसिक होना चाहिए, और स्ट्रॉन्ग बेस, मोनोएसिडिक, needed to change the pH of 1 liter buffer by 1 unit. So since I'm saying here number of moles, so that acid must be a monobasic, that strong base must be a monoacidic, needed to change the pH of 1 liter buffer by 1 unit. एसिडिक बफर आपने देखा था कि वीक एसिड कैन वर्क एज अ एसिडिक बफर, लेकिन इसका बफर कैपेसिटी बहुत कम रहेगा. Similarly, weak base itself can work as a basic buffer, but buffer capacity is going to be very negligible and may not have much significance in the practical cases. Mainly the buffer for your question part are acidic buffer, which are made up of weak acid and a salt of weak acid plus strong base, weak acid plus salt, weak acid plus weak base ka salt. Similarly, the basic buffer. The solution of strong acid, generally of the concentration 0.1 molar HCl for example, तो इस टाइप की जो सॉल्यूशन है जिनका pH 2 से कम होता है, तो दे टेंड्स टू बिहेव एज अ बफर. सॉल्यूशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस, जनरली जिनका pH 12 से ज़्यादा होगा, ऐसा सॉल्यूशन दे टेंड्स टू बिहेव एज अ बेसिक बफर. तो बफर का जनरल फार्मूला क्या होगा, किस तरह से बफर कैपेसिटी कैलकुलेट किया जाएगा, तो डेफिनेशन को याद रखते हुए आगे बढ़ेंगे. बफर कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला दिया गया है. बफर कैपेसिटी डिनोटेड बाय बीटा, फॉर एग्जांपल dn अपॉन dph. व्हाट इज द d? इट इज अ डिफरेंशियल टाइप, यानी कि वेरी स्मॉल, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मोल्स ऑफ एसिड एडेड. 2.303 in bracket kW upon H plus C buffer, concentration of buffer into Ka, that is of weak acid, H plus upon Ka plus H plus ka square. So this is generally the buffer capacity for acidic buffer we are writing here, because we are taking Ka in this. So इसमें जो टर्मिनोलॉजीज है उसको देख लेते हैं एक बार. So what is the dn? It is a very small number of moles. So there is a small number of moles, that means a small quantity, number of moles of acid, strong acid or a base added. dpH, this is written as change in pH, that resulting change in pH, resulting change in pH. मतलब कि वेरी स्मॉल क्वांटिटी एसिड अगर ऐड करते हैं तो बफर के pH में कितना चेंज आता है, दैट डिफाइंस द बफर कैपेसिटी. वेराज सी बफर, कॉन्सेंट्रेशन बफर, ये क्या होगा? सी बफर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बफर इज समेशन ऑफ वीक एसिड प्लस इट्स कॉन्जुगेट बेस, इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन का समेशन, दैट इज टोटल बफर कॉन्सेंट्रेशन. वी कॉल इट एज अ टोटल बफर कॉन्सेंट्रेशन. टोटल बफर कॉन्सेंट्रेशन, दैट मीन्स वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस, इन दोनों कॉन्सेंट्रेशन का समेशन इज सी बफर. फॉर मोस्ट ऑफ द बफर, ये जो शुरू का पार्ट है, दिस इज अ वेरी स्मॉल एंड कैन बी निग्लेक्टेड अगेंस्ट द थर्ड टर्म इन दिस इक्वेशन. तो इफ यू निग्लेक्ट दैट पार्ट, इसको अगर निग्लेक्ट करते हैं, अपना इक्वेशन बनेगा dn, that is moles of acid added, in which change in pH, which we are saying as a buffer capacity beta,
This becomes 2.303 C buffer Ka into H plus divided by Ka plus H plus का square. This is a calculation, that is a buffer capacity. कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला आप यूज करेंगे. मैक्सिमम बफर कैपेसिटी कब होगा? बफर कैपेसिटी दैट इज बी मैक्सिमम इज ऑब्जर्व व्हेन पीएच इज इक्वल टू पी के. हम फिलहाल एसिडिक बफर के बारे में बात कर रहे हैं. बेसिकली उसके अकॉर्डिंग के की जगह के भी आएगा. सो पी एच इज इक्वल टू पी के. इसका मतलब है कि एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू के ए. सो पी एच इज माइनस लॉग ऑफ एच प्लस एंड पी के इज माइनस लॉग ऑफ के. तो माइनस लॉग टर्म अगर निकाल दिया तो बचेगा क्या? एच प्लस इज इक्वल टू के. एच प्लस इज इक्वल टू के. इफ आई पुट दिस equality in the given equation, h plus is equal to k, that will give me a maximum buffer capacity. The maximum buffer capacity, that is a beta max, will be equal to dn upon a dph, and this comes to be 2.303 a square or a square 4. So this will be c buffer divided by 4. This is the maximum buffer capacity which will be obtained at pH is equal to pK. That means equal concentration of salt and salt and weak acid. अभी इसमें हम जो यूज कर रहे हैं वो डिफरेंशियल पार्ट है कि dn very very small change addition of acid, and here is a very small change in the pH, which is the differential form. That means this is giving us इंस्टैंटेनियस बफर कैपेसिटी. ये क्या दे रहा है आपको? इंस्टैंटेनियस NEOUS इंस्टैंटेनियस बफर कैपेसिटी फॉर अ रेंज ऑफ pH दैट विल कॉल इट एज अ बीटा एवरेज. सो यहाँ से यहाँ तक अगर वो ऐड करते हैं दैट इज एडिशन ऑफ मोल्स विच इज अ लिटिल लार्जर क्वांटिटी divided by delta pH. So this will be for a range purpose कि pH समझो 3.2 से 3.5 हो गया या 3 से 5 हो गया. So this is a longer range over there. This is not a small part. तो ये डिफरेंशियल फॉर्म जो एक्सप्रेस करता है वो इंस्टेंटेनियस बफर कैपेसिटी, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसका बफर कैपेसिटी क्या होगा. एंड दिस इज आफ्टर ऑब्जर्विंग कि इतने मोल्स ऐड करने पे कितना pH चेंज हो रहा है. So number of moles will be larger value addition and change in pH will be a larger value. This gives us average buffer capacity for that given buffer. For stronger acids or strong acid or a strong base, that buffer capacity can be written separately, something like this, which is I'll say buffer for strong acid solution is dn by dpH, and this is observed to be 2.303 in bracket concentration of OH minus plus H plus, or the other way H plus plus OH minus. So this is applicable for when we are saying that strong acid solution or strong base solution, strong acid solution or strong base solution. So it is very difficult generally to calculate exact buffer capacity for strong acid, because when you are adding a small quantity of other strong acid in the given strong acid, its pH is going to be further decreased and its buffer capacity is going to be further increased. So instantaneous is little difficult. Average we can find out. This is all about the buffer capacity. For calculation purpose, the questions will mainly depend on the average one. So the questions mainly on this part, or otherwise it will be for this part also. So some questions we'll see in our question series part.